beginning with equity research financial modeling. So now today our agenda is to understand how to make the basic financial model. Okay, the basic one. And even if you would learn the comprehensive one, रास्ता यही है जाने का. So ऐसा नहीं है कि if you have to make the comprehensive one, there is some another way. No, 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 no. Way is this only. रास्ता यही है. पहले हमेशा बेसिक ही बनेगा, उसके बाद लेवल अप होगा. So tomorrow we level up. Today we are doing basic. But anyways, let's say you have learned very high-fi model. Still, I will always recommend first to make the basic model. Okay. Why to do this? Many students do this mistake. When they learn step number 2, they do step number 1 and step number 2 together, and then they come to me. Just today somebody came and then they say that we are not able to tally the balance sheet, and even when they show me the balance sheet, I say no, this is like I can't help you tallying the balance sheet now. आपने पूरा मेस कर दिया. आपको स्टेप 1 स्टेप 2 मिक्स नहीं करना है. अभी बता रही हूँ स्टेप 0 में. वेरी वेरी क्लियर. स्टेप 1 इज स्टेप 1. स्टेप 2 बाद में ही आएगा. प्लीज फॉलो द सीक्वेंस. अगर आपने सीक्वेंस ऊपर नीचे किया, सारा साथ में किया, नहीं टैली होगा. उसके बाद देर इज ओनली वन वे कि पूरा मॉडल वेस्ट करो एंड फिर से बनाओ. इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर इट, then please make the model properly. All right, just please tell me the company for which you want me to make the model. Any company whose name is coming to your mind, please tell me that. Please be quick. Haldiram. Haldiram is not listed. Any listed company, please tell me. Ma'am, Lenskart. Which? Raymond. Lenskart. Raymond, Lenskart. Raymond is listed. Okay, sure. I'm not too sure about Lenskart. Raymond is listed. All right, awesome. So now Raymond is something you have picked, and for this we will make a financial model. Now, first thing in the financial model, if you remember, when people come to Shark Tank, what's the first thing they talk about? They talk about what? Tell me. They talk about business model, what the company is doing. So always read it. Raymond Limited incorporated in 1925 with interest apparel sectors as well as presence. Okay, so basically we also know it operates in 55 plus countries, Japan, Middle East. We know this. But फिर भी, you can have just a rough read you can have just to have the idea that, okay, they are basically in textile and apparel sectors. All right. Brands, so they have many brands like the Address, 10 Habitat, Super Drive, 10 Era, branded textile, and you can just go through and you can see revenue mix. So branded textile से 40% आता है, branded apparel से 16%, garmenting 13%, real estate 13%. See, so much is there. So you can just have a read through it. Always whenever you start the company, click on the website link and just in maybe in 2 minutes, 3 minutes, just go through the website, so that when we start. Why I'm saying this is for you to understand the revenue generation model, कि company पैसे कैसे कमाती है. How is the company earning money? How is the company making money? So the website is getting loaded. Quality, excellence. Okay, their focus is more on quality. Launching. So this is some. Okay, as we saw now, real estate also. If you remember, we saw real estate also. And then they have this color press. So you can read about our businesses, our company, beyond business, what is it? What are the businesses? You can read on the businesses. And as a group, this is involved in numerous businesses: consumer care, denim, engineering, and real estate also. Right? So you can see their businesses. Just have a gist of it. Thoda website pura dekh lo, and then you start with the
data. Now these are all the ratios. We have learned ratios, right? We have learned ratios, EV, EBITDA, debt to equity, ROC. Good, ROC is 30%, very nice. है ना? Dividend yield is 0.49%, debt to equity is 0.91, ज़्यादा है, but that's okay, right? So अभी इस सब से अभी हमारा concern है go to profit and loss and make the what? Make the statement. We will start from the blank Excel sheet so that you're very, very clear. We'll make updated models. What I'll say is, I'll just select this profit and loss. Okay? When we were doing project finance, na, we were given a lot of assumptions. Assumptions बहुत दी हुई थी हमें. याद है ना, ऐसा है. अभी कोई assumptions देने वाला नहीं है. Now now you're yourself have to do everything. अच्छा, एक मिनट, पीएनएल मुझे थोड़ा ओपन करना चाहिए था. लेट मी ओपन अप द पीएनएल. सेल्स, एक्सपेंसेस, ऑल राइट, अदर इनकम, not much needed. I'll again do copy paste. I'll say copy, go here again, and I'll say paste. Done. Sheet 2, I will go for balance sheet. Open if you feel it's needed. Borrowings, thoda data hai. Other liabilities, some data is there. Fixed assets, generally, don't open fixed assets because unnecessary, division hota hai. Don't open it. Then other assets are, yes, inventory, cash, and all this. So we'll select this also, balance sheet also. Copy the balance sheet and then paste it here. Very nice. Wrapping is done. वो मैंने हटा दिया. ठीक है. All right. And then just give the sheet name as BS. Yeah. So this is what I have done is I have copied the data from internet and got into our sheet. That March 24 is 1/4/23 to 31/3/24. What is March 23? This is 1/4/22 to 31/3 31/3/23. Like year ended 23. This is year ended 23. This is year ended. This year ended 23. This is year ended 24. And trailing 12 months is last के जो आपके 4 quarters अभी गए. Like अभी June quarter went, उसके पहले March quarter, and उसके पहले all the 3 quarters which were there. All right, so that is trailing 12 months, but trailing 12 months, we don't have to use it. Abhi, financial model has to be whatever is the recent year data available. So, trailing 12 months, I will delete. Okay, now you can select any data, like however years you want, उतने years का आप actual data build कर सकते हो. Let's say अगर आप 6 years का actual data ले रहे हो, I'll delete all the past data. Let's say you select 6 or 5 or 4, उतना data you delete it. Okay, so let's say I am selecting how many years? I am selecting 6 years. So forecasted could be 5, could be 4. मतलब मेरा point ये है कि देखो जो base होता है ना, base वो बड़ा होना चाहिए. ऐसे नहीं, चार माले का ग्राउंड फ्लोर है, उसके ऊपर यू आर मेकिंग सिक्स हाउसेस का फर्स्ट फ्लोर. नहीं, ग्राउंड फ्लोर इज 6 हाउसेस, सो द फर्स्ट फ्लोर कैन बी 6, कैन बी 5, कैन बी 4. गेटिंग इट ना? ओके, तो मैं इसको हटा देती हूँ एंड आई विल डू द बेसिक राइट अप. दिस इज द actual data. Right now I'm just working on formatting. I'm not basically doing anything. I'm doing basic formatting. I'll say I'll drag it here, and जो भी आपको 5-6 साल का बनाना है, I'll say fill years. Let's say 1 2 3 4, 4 साल का बना देते हैं. ओके, तो March 24 से लेके up, ओहो, we want to fill years, right? तो March 25, March 26, March 27, March 20. All right, and this all data will be what? This all data will be, this is estimation, right?
Same formatting you will do it in the balance sheet. So March 19 से March 24. Take it up March 19 से March 24. I'll delete this. March 19 to March 24. ठीक है. Insert. Now I'll just copy and just paste. Done. Now the headers. How the headers should look like. Do something like, you know, whatever are your brand colors. Raymond के brand colors देखो कैसे दिखते हैं. And accordingly, you know, you can make your this look like. I'm just formatting it up to the basic headers, but you can look it, you know, more beautiful. My formatting will be just in a way so that the model look presentable. Your formatting has to look like, you know, making the model look very, very beautiful. All right. So this is the structure. Now in this structure, there is a very important thing, which is color coding. All right. So what do? We generally use, these are the general colors which are used. You may change it if you want it, but these are the general universal colors. Blue is the hard coded actual data. You already know this, right? Actual data यानी कि जो आपने बाहर से लाया है, जिसमें फॉर्मूला बार में जाओगे तो नंबर दिखेगा. Red are your assumptions and black are your कैलकुलेशंस, राइट. तो ब्लैक के फॉर्मूला बार में जाओगे तो कुछ कुछ ऐसे दिखेगा, ये प्लस ये ऐसे समथिंग समथिंग. ऑल राइट. सो all the data which you have brought from outside, we will color it blue. ठीक है. Let me color this. Blue is looking nice. Okay. And here also in balance sheet also, what you do is make all the data look blue. Done. Income statement, all blue, blue, blue. ठीक है. We'll format it more. This black and balance sheet, all the actual data blue. Now let's take this formatting to a better level. If you see, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है डेटा. सो टोटल लाइबिलिटीज एंड टोटल असेट्स, प्लीज प्लीज ध्यान रखना ये बात, सब टोटल्स नहीं होने चाहिए. ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखो ये चार नंबर्स हैं, फिर बहुत लोग ऐसे करते हैं. सी 55, 65, 36, फिर बोलेंगे टोटल करंट असेट्स हुए कितने, इतने टोटल करंट असेट्स हुए. फिर इसमें दे विल ऐड नॉन करंट असेट्स. फिर बोलेंगे अच्छा अभी तक का टोटल कितना हुआ, अभी तक का टोटल इज दिस. This is all very confusing. Your subtotal, total, everything looks like same. Don't do that. एंड में बैलेंस शीट टैली नहीं होगा, कुछ भी नहीं ढूंढ पाओगे. सो प्लीज डोंट डू दैट. हम अकाउंट्स के एनालिस्ट नहीं बैठे हैं कि हम एक 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 माइक्रो आइटम में जाएंगे. वी आर वी आर फाइनेंस पीपल. वी लुक इन टू फ्यूचर. जब कल की प्लानिंग करनी होती है, सो हाउ यू प्लान योर डे. यू प्लान लाइक कल 5 से 6 ये करूंगा, 6 से 7 ये करूंगा. यू डोंट प्लान लाइक 6-3 से लेके 6-5 तक ये करूंगा, 6-23 से 6-27 तक ये करूंगा. नो. Right, we have to look into we have to plan things macro level, right? So what I will do is just one total liability side and one total asset side. 10 छोटे छोटे टोटल नहीं होने चाहिए. इसको आप कुछ भी whatever basic color you want, some background you set up some background, whatever colors are your brand colors, set it up, and I'll make them black. Why I'll make them black? Because ultimately I'm going to delete them and make it our own. But now I'm not doing, because I want to show you something. See, if you see the total, it will not match. See, the total is 11,327. Can you see here in the sum 11,327? So this is not matching. Why this is not matching? Because you see there are so much numbers which you can see a bit bold. ये बोल्ड क्या है? अगर आप इनका टोटल देखोगे तो देखो क्या है. द सम बॉक्स में देखो 2468 दिख रहा है. इनका टोटल देखो 2219. ये 2219. तो क्या पता चल रहा है उससे कि ये वाला जो बोल्ड वाला है, दिस इज ऑल रिपीटेशन. ये सब रिपीटेशन. अब जब आपने रिपीटेशन हटा दी, just check whether it is matching or not. मैच कर रहा है या नहीं मैच. राइट. इसको मैं apart from colors, I will just give it a some feeler that ये total है.
नाउ अब आप देखो कि ये मैच कर रहा है, मैच कर रहा है 6640 सम में मैच कर, वेरी गुड. सो एज इट इज मैचिंग, we will delete this and we will bring our own totals. ठीक है, do your own totals, it's very important. Do your own total, press enter. ठीक है, पूरे कॉलम में हमें टोटल चाहिए. एंड हियर ऑल्सो, दिस साइड ऑल्सो, असेट साइड ऑल्सो, डू योर ओन टोटल. ठीक है. नाउ व्हेन यू डू दिस, यू विल फाइंड समथिंग. ये चेकसम आप बाद में हटा देना. यू विल फाइंड समथिंग दैट यू नो both the sides are not actually tallying. That is because बहुत सारे decimals होते हैं, screener से data आता है, so because of which both the sides don't really tally, but it is our job to tally both the sides. So what do we do? What do you do is just take it up and tally both the sides. How will you tally? You have to manually alter a number. Manually आपको number alter करना पड़ेगा. कौन सा नंबर ऑल्टर करें? हियर फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी. क्या बोलता है मटेरियलिटी? देखो, जैसे कि इफ आई से यू कि लेट्स से यू हैव टू गिव समबडी 10,03,650 रुपीज. ठीक है, और आप ये पैसे दे के आए और आपको कैब वाले भैया को 1,000 रुपए देने थे. ठीक है, अब ये भैया ने आपको 650 रुपीज कम दिए. ये कैब वाले भैया भी आपको 650 रुपीज कम दे रहे हैं. आपका 350 फेयर हुआ, ही इज गिविंग यू 650 लेस. विल यू एक्सेप्ट, विल यू फॉलो अप विद दिस गाय जिससे आपको 10 लाख 3,650 लेना था? भैया 650 दो, 650 दो. और विल यू लीव इट? यू विल लीव इट, राइट? बिकॉज 10 लाख के सामने 600 रुपए का अमाउंट राउंड ऑफ है. 1,000 रुपए वाले को 600 रुपए छोड़ दोगे क्या? लेने ही 1,000 रुपए, 600 कम दे रहा है, नहीं छोड़ दो, राइट? सो व्हेन द अमाउंट इज बिग, वो एब्सॉर्ब हो जाता है, राइट? एब्सॉर्ब हो जाता है. सो इफ यू सी हियर, अगर हमें मुझे 1 करोड़ का नंबर चेंज करना है, राइट? अगर मैं इसको किसी भी छोटे से नंबर को 1 करोड़ से चेंज करूंगी, 83 को 1 करोड़ से चेंज करूंगी, तो इट्स अ प्रॉब्लम, राइट? सो विच नंबर टू पिक टू चेंज? जो बड़ा हो, एब्सॉर्ब कर ले. सो सी ऑल द नंबर्स, विच एवर इज द बिगेस्ट नंबर, चेंज दैट. कौन सा बिगेस्ट नंबर है बैलेंस शीट में? कोई भी, ऐसे जरूरी नहीं है कि एक ही स्पेसिफिक ही उठाना. सी मेरे हिसाब से ये फिक्स्ड एसेट्स का 1900 लग रहा है. रिजर्व्स भी उठा सकते हो और फिक्स्ड एसेट्स भी. नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, वंस यू पिक समथिंग, ऐसे नहीं करना कि ये साल में इसको उठाया, ये साल में इसको उठाया, ये साल में इसको उठाया. यू इफ यू अंडरस्टैंड अकाउंट्स, उसमें कैसे चलता है? कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉट फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉट फॉरवर्ड, राइट? तो वो ईयर बाय ईयर चलता है. तो you can't just pick and drop the things. So what you are supposed to do is एक ही कोई भी उठाओ, जो उठाना है उठाओ. थोड़ा 1800 की 1900 की जगह 1800 वाला उठाओगे चलेगा, बट फिर stick to that, don't take anything else. Okay, so let me take any number, let me select any number. तो चलो मैं फिक्स्ड एसेट्स पिक करूं या रिजर्व्स, व्हाटएवर व्हिच यू वांट टू पिक. चलो रिजर्व्स उठा लेते हैं. ओके, सो हाउ विल वी टैली? वी विल से इसको हमें करना पड़ेगा 3, तो ये टैली हो जाएगा. एंड दैट इज हाउ वी विल बी टैलिंग ऑल दोस. सेकेंड ईयर यहाँ पे 3 का डिफरेंस है. ठीक है, तो पूरा का पूरा जो भी डिफरेंस है, फोकस ऑन ओनली 1. आई विल मेक इट 28. ऑलराइट, आई विल मेक इट 91. and then here I will make it 4550, and you see all the years are perfectly tallied. Maybe you can keep them black, a bit different color you can give, थोड़ा light करने के लिए. ठीक है, और so that's it. That's the good level of formatting you can do. And then now we can proceed with what? Now we can proceed with working on to making what? We can start making the financial statements. Now we are done with the actual data, and now we will begin with what?
begin with all the calculations assumptions पे जाएंगे. फोरकास्ट करना मतलब हमें पता है एक्चुअल क्या है, आपको गेस करना है कि फोरकास्ट क्या हो, right? So you know this is the actual data. Now you have to forecast the data. Now to forecast the data, now nobody will be giving you कि भैया ये लो assumptions ready plate में. Assumptions आपको खुद लेनी है, यही तो आपका wisdom है, right? So you know, and that's why it is said that financial models are very very subjective. क्योंकि यही मॉडल अगर पर्सन ए बनाएगा, पर्सन बी बनाएगा, तो शायद मैं इस मॉडल को कुछ देखो ना, सपोज मैं रेमंड को, आई फील रेमंड इज वेरी गुड, तो मैं बहुत ज्यादा इसके assumptions वैसी रखूंगी. somebody will feel हाँ रेमंड इज वेरी बैड, तो उसकी assumptions अलग होंगी, right? So it completely depends upon how your thought process is um, towards the particular industry, towards the particular brand, and accordingly the models are very very subjective because the assumptions are very very judgmental. They are based on, you know, human emotions. And how does these human emotions come from? By studying the business. तो इसलिए मैंने कहा बिजनेस पढ़ो, पूरी वेबसाइट पढ़ो, अच्छे से आप वेबसाइट को समझो. यू नो, वेबसाइट पे इन्वेस्टर सेक्शन में देयर इज मैनेजमेंट डिस्कशन, एनालिसिस, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन है, पढ़ो, आपको पता चलेगा कौन चेयरमैन है, क्या कर रहा है, उसका विजन क्या है, वो क्या करना चाहता है कंपनी के साथ, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो यू गो टू द so so it's very important that you go to the Manka or whatever website and see who is the chairman, what is the, you know, business of the company, what is the vision of the chairman, क्या करना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, कहाँ पहुंचाएंगे, क्या चल रहा है, मैनेजमेंट में कौन है, इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैनेजमेंट क्या कर रही है, कैसे कर रही है, इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है. अब अगर आप इसकी सेल्स देखोगे ध्यान से, सो यू विल फाइंड that the sales of the company is like, you know, 11%, 11%, 17%, right? अगर आप ये recent years का सेल्स देखोगे, 9.8%, 32.96%, what do you think फ्यूचर का सेल्स कितना होगा? क्योंकि आप देखो मार्च में 79% का सेल्स दिख रहा है, फिर यहाँ पे -46% दिख रहा है, फिर यहाँ पे माइनस. कैन यू टेल मी व्हाई इज दिस माइनस? ये रीजन आपको पता होगा, बताओ. टेल मी व्हाई इज दिस माइनस? कोविड. वेरी गुड. नाउ एज अ रैशनल ह्यूमन बीइंग, व्हाट विल यू से? कोविड फिर से आएगा 1 साल बाद? और विल यू से नहीं भाई कुछ नहीं होगा? एज अ रैशनल ह्यूमन बीइंग, व्हाट्स द गुड अजम्पशन टू टेक कि कोविड फिर से आएगा 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, और कभी नहीं, कभी नहीं देखो इसे नहीं आएगा बट नहीं आएगा. बी रेडी फॉर द रिस्क. हाँ, वी विल बी रेडी, बट एज अ फोरकास्टेड जो बैलेंस शीट बनानी है, लेट्स से आपको बताना है कि अभी 6,000 है तो फ्यूचर में क्या होगा, तो आप ये नहीं लिख सकते ना कि हाँ फिर कोविड आएगा फिर अब ये 6,000 हो जाएगा, मतलब कम होगा. द रैशनल अजम्पशन इज ऑलवेज पॉजिटिव कि नहीं नहीं अब कुछ नहीं होगा, जब होगा तब होगा. हो तो रही है ना चीजें, वॉर्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं. और यू नो एक और चीज होती है कि आपने कंपनी कैसे चूज करी है. अब जैसे कोविड की अगर आप बात करोगे, तो अगर आप देखो, इफ यू सी दिस हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, तो कोविड आए या वॉर हो, it its profit and loss account is not going to be hugely affected. Why? Because you will not stop doing shampoo, you will not stop doing brush, right? So इसका देखो ना आप स्टेटमेंट 39,000, 47,000, आप देखो it's positive only, right? Because it is the FMCG industry. Vis-a-vis if you see some other brands like अभी जैसे रेमंड है, रेमंड is what? रेमंड is, you know, very much what do you say? Raymond is very much in the sector which is very much related to the travel. Like you see this, if you see this VIP, so you see the sales is affected huge, right? -63, फिर 108% से ऊपर हुआ.
So why is this minus 63? Why is this 108% positive? Why this minus 63 happened? If you see, what does this brand do? This brand, हाँ जी, so कौन बाहर जा रहा था कोविड में? कोई नहीं जा रहा था, राइट? So that is how things work. तो रेमंड का भी वही है, that Raymond is in such a sector that its sales gets affected by what? Its sales gets affected by any kind of you know अप्स एंड डाउन्स इन द मार्केट. तो वॉर होगा तो लोग रेमंड शायद नहीं जाएंगे, बट एफएमसीजी चलेगा. फार्मा कोविड में और ज्यादा चला था. बैंकिंग अच्छा अच्छा चला था, राइट? तो एवरी टाइम इट डिपेंड्स. जब भी कोई भी वॉर होता है तो देर आर सम इंडस्ट्रीज जिसमें बूम आता है. जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो जब उनसे सामान नहीं लिया जाएगा, आपके कंट्री से ज्यादा लिया जाएगा. सो देर आर मेनी मेनी फैक्टर्स. नाउ हियर वन फैक्टर टू कंसीडर इज, अगर कभी माइनस होता है ना, तो उसको आप समझो हाउ डज इट वर्क. लेट्स से दिस इज 100, दिस इज 110, दिस इज 120. ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि ये किस रेट से ग्रो कर रहे हैं. हाउ डू यू से, हम इसको कैसे करते हैं? न्यू अपॉन ओल्ड माइनस 1, राइट? सो व्हाट विल आई से, ये किस परसेंटेज से ग्रो कर रहा है? ये 10% से ग्रो कर 140. ठीक है, कैन वी से ये अराउंड 9-10% से ग्रो हो रहे हैं, है ना? अराउंड 10-9-8% से ग्रो हो रहे हैं. ठीक है, विज आई विल गिव यू अनदर कंपनी. ठीक है, यहीं पे मैं एक और कंपनी बनाती हूँ जिसने, ओहो, दिस, लेट्स से उसने 100 किया. एक और कंपनी है जिसने स्टार्टेड फ्रॉम 100, कोविड आ गया, वेंट ऑन टू 50, somehow struggle करके went on came to 180, and somehow struggle करके came to 130, and then uh, it is like 135 or 140, सेम हो गया, राइट? अब आप इसका अगर कैलकुलेट करोगे व्हाट इज द ग्रोथ रेट, तो देखो क्या ग्रोथ रेट है. तो लेट अस चेक द ग्रोथ रेट. इफ यू सी क्या ग्रोथ रेट दिख रहा है? -50%, पॉजिटिव 60%, 63%, 8%. आप सिर्फ मुझे इतना बताओ, क्या ये कंपनी 63% से ग्रो हुई क्या एक्चुअली में? क्या ये कंपनी 63% से ग्रो हुई क्या एक्चुअली में? ऑन एन एवरेज कितने से ग्रो हुई? क्या ये कंपनी ऑन एन एवरेज 20% से ग्रो हुई? इज द 63 ट्रू और फॉल्स? आप बताओ. आप समझ रहे हो क्या हुआ यहाँ पे? देखो, ये वाला है ना, ये ऐसे 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 चल रहा था, ऐसे 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 चल रहा था. इसमें क्या हुआ, ये ऐसे चला गया और फिर ऐसे ऊपर आया, तो आपको लग रहा है हाँ इतनी बड़ी ग्रोथ थी. बट इज इट ट्रू? इज इट रियल? आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज लाइक 1 2 3 4 चुपचाप चुपचाप चल रहा है, और आपको लग रहा है 9% की ग्रोथ है. तो ये 20% की ग्रोथ नहीं है, ये 20% की ग्रोथ नहीं है. ये -50 था, फिर 60 आया, फिर 63 आया, राइट? सो व्हाट वुड बी द वैलिड अजम्पशन टू टेक हियर? मुझे बताओ, क्या अज्यूम करूं मैं फ्यूचर में? क्या अज्यूम करूं? लास्ट 6 साल का एवरेज अज्यूम करूं? व्हाट शुड बी अज्यूम? मुझे तो लग रहा है कोई एवरेज नहीं अज्यूम करना चाहिए, बिकॉज मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना 79 और ये 32, ये तो रिकवरी फेजेस है. I feel that this 79 and 32 are just like the recovery phases. तो क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से? अगर ये एक नॉर्मल हिंदुस्तान यूनिलीवर होता था तो मैं इसको बोलती थी एवरेज ऑफ लास्ट 5 साल 6 साल वट, ऐसा कुछ बनाती थी. 14% बना सकते हो आप, बट दैट इज नॉट फैक्चुअली ट्रू. ओवरऑल आप देखो, कंपनी 11% से ग्रो कर रही थी, फिर कोविड के वजह से थोड़ा डाउनफॉल आया, और ये 79 and 32 फेक है. मैं ये बता रही हूँ, वो सिर्फ रिकवरी दिखा रहे हैं. ओवरऑल कंपनी 9-10% से ही ग्रो करने वाली है. तो मेरे हिसाब से अगर मुझे फ्यूचर जानना हो तो मैं यही बोलूंगी कि कंपनी शायद
फ्यूचर में हर साल 9% से ग्रो करेगी। इफ यू हैव एनी अदर अजम्पशंस, आप मुझे अपनी अजम्पशंस बता सकते हो। टेल मी, डू यू हैव एनी Maybe अदर we can take अजम्पशंस? average of March 19 and March 24. हाँ, वी कैन डू दैट, श्योर। वो थोड़ा ओल्ड डेटा हो जाएगा। अभी देखो, अगर आपको रेमंड के बारे में कुछ पता होगा थोड़ा, तो इनका इंटरनल फैमिली इश्यूज बहुत है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इनका इंटरनल फैमिली इश्यूज बहुत है। डू यू नो अबाउट रेमंड? Like there is a person who like his father built the business, and his son kicked out him of the business, and then फिर उसका उसकी wife has done some cases on him claiming a huge amount of the property। तो ये सब जो भी हुई है ना, लाइक मैनेजमेंट इश्यूज, ये सब बहुत रीसेंट टाइम्स में हुए हैं, इधर इधर हुए हैं। सो इसकी वजह से March 19 is too old data to take on। it's less reliable because generation भी चेंज हो गई यहाँ पे, और उसमें इश्यूज भी है। ऐसे नहीं कि स्मूथ ट्रांजिशन नहीं हुआ जनरेशन टू जनरेशन, दैट इज अ इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो ठीक है, इट्स ओके, वी कैन टेक द एवरेज, दैट इज ऑल्सो ओके आइडिया, गुड आइडिया। नाउ हाउ डू यू डू इट, यू नो? अच्छा, ये सेल्स, ये जो निकला ना, ये कैसे निकालते हैं? आप खुद भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप कोई दे ही। हाउ डू यू कैलकुलेट? यू कैन से इज इक्वल्स टू, यू नो, दिस माइनस दिस। कितने से ग्रो हुआ? इतने से ग्रो हुआ। टू द बेस ऑफ कितना? टू द बेस ऑफ इतना। तो आपको पता चलेगा कि ये देखो -1.52%। और यू कैन ऑल्सो डू इट लाइक दिस, न्यू अपॉन ओल्ड minus 1। So this is also 1 day। So you know whatever works for you, you can calculate। ठीक है, देखो सेम आंसर्स हैं, आपको चाहिए तो यू कैन डू इट। और डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ लेट्स फोकस ऑन कि अब कहाँ जाएंगे हम। तो 9020% हम थे। कैन वी से into we will become 1 plus 10.62%? Can we say that? Yes, ma'am. Yes, awesome। Now coming on to the expenses। Expenses में there are two important things to focus। देखो, जैसे कि मटेरियल कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, अदर कॉस्ट है। अब ये जो सारे के सारे कॉस्ट हैं, व्हाट डू यू थिंक, वेरिएबल दिख रहे हैं या फिक्स्ड दिख रहे हैं आपको? सेल बढ़ेगी तो मटेरियल ज्यादा लगेगा, सेल बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगा। सेल एम्प्लॉय कॉस्ट, अगर आपकी सेल बढ़ेगी तो एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी तो अदर कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो कैन आई से ऑल दीज कॉस्ट आर काइंड ऑफ वेरिएबल? Yes, ma'am. वेरिएबल है, नहीं है, है ना? सेल्स पे बहुत डिपेंड कर रहे हैं। सो ऑल द एक्सपेंडिचर्स हियर वर वेरिएबल, दैट्स व्हाई आई डिलीटेड। अगर कोई फिक्स्ड होता था ना, यहाँ पे फिक्स्ड में क्या होता है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस ना इसके साथ डबल नहीं होते हैं। मतलब लेट्स से आपका जो सेल है, आपका जो 100 का सेल है, 100 का सेल 200 हो गया, ठीक है। और एम्प्लॉय कॉस्ट, यहाँ पे आपका एक एम्प्लॉय, 10 एम्प्लॉयज काम करते थे, तो 200 हो गया, तो 20 एम्प्लॉय काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी गो टू अ सलोन, ठीक है, सलोन हेयर कटिंग सलोन है, ठीक है, 100 का सेल हो रहा था, ठीक है। या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहां पे 10 वर्कर है, 100 की सेल है, 200 की सेल हो गई, तो आपको क्या लगता है कितने वर्कर लगेंगे? 10 वर्कर हैं, कुछ लेबर वाला काम है, तो अगर 200 सेल हो गई तो आपको क्या लगता है, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी देयर? 20। ट्रू और नॉट? वेरिएबल खर्चा है, नहीं है? Yes, है ma'am. ना वेरिएबल, राइट? बट लेट्स से यही लेबर वाला ही पकड़ लो आप। लेट्स से दिस कंपनी इज सम टेक बेस्ड कंपनी। आजकल कितनी सारी टेक बेस्ड कंपनी है, कितने सारे एप्स हैं, क्रेड है, फाइव पैसा है, एंजल है, एंजल वन है, एंड देर आर मेनी मेनी टेक बेस्ड कंपनीज, राइट? देर आर मेनी मेनी एप्स, जिसमें बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं होती, राइट? अगर उसकी सेल 100 से 200 हुई, तो क्या उसके एम्प्लॉयज 10 से 20 होंगे क्या? 10 के 10 ही रहेंगे। वो टेक बेस्ड कंपनी है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, 10 के 10 ही होंगे। हाँ, आई कैन से वन थिंग,
अगर ये जो कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, अगर ये 10 था तो नेक्स्ट ईयर ये 11 हो जाएगा। क्यों किया मैंने कॉस्ट 10 का 11? Because employees will not work for the same salary or anything will not come for the same cost. Time value of money inflation से add होगा। तो अगर fixed खर्चा कोई भी होता था, then you add that खर्चा by inflation। ठीक है, then you can add that particular expense by inflation। but अभी यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। so what should we do? you should, अभी वेरिएबल है तो वेरिएबल में हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ये जो 6000 है ये इस 6582 का कितना परसेंट है। तो आप देखो अराउंड 91%, कितना परसेंटेज इनका मटेरियल कितने का जा रहा है, कितना वेरिएबल, इतना इतना वेरिएबल है। सो क्योंकि काफी कंसिस्टेंट है 80 85 90, यू कैन टेक एवरेज ऑफ द पास्ट ईयर्स, कहीं ज्यादा कहीं कम, यू कैन टेक द एवरेज ऑफ पास्ट ईयर्स एंड देन यू विल से हर साल जो मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके कितना परसेंट होते हैं, मटेरियल्स जो होता है, जो भी खर्चा होता है वो सेल्स का 90% होता है। सो हाउ टू प्रेडिक्ट फ्यूचर एक्सपेंसेस? आप बोलोगे जो भी आपका फ्यूचर का सेल्स है मल्टीप्लाइड बाय, बोलो बोलो कितना परसेंट, 90%। सी इट्स वेरी सिंपल ना। आप नीचे कैसे आए, आपने बोला 7000 खर्चा है, 7000 खर्चा है, 8000 सेल है, तो कितना परसेंटेज खर्चा होता है, 85% खर्चा होता है। तो 9978 सेल है तो कितना परसेंट खर्चा होगा, 90% खर्चा होगा, राइट। अच्छा, सम वन क्वेश्चन माइट बी कमिंग टू योर माइंड कि मैं हर बार 90% क्यों ले रही हूँ। लाइक मेनी पीपल थिंक कि हमने इसको ऐसे ड्रैग क्यों नहीं किया, ऐसे ऐसे ड्रैग क्यों नहीं किया, है ना, ऐसा क्वेश्चन आया आपके माइंड में, ऐसे ड्रैग क्यों नहीं किया, हमने इसको फिक्स क्यों कर दिया, सेम एज लास्ट ईयर क्यों कर दिया। द रीजन इज वी हैव टू फिक्स इट बिकॉज यू कांट बिल्ड अजम्पशन ऑन अजम्पशन। आप ये नहीं बोल सकते कि कल मैं इधर जाऊंगा, फिर परसों मैं, अगर कल ये हुआ तो फिर ये होगा, तो फिर अगर ये हुआ तो ये होगा। लाइक टुमारो ऑप्शन ए सिलेक्टेड देन ये होगा, ऑप्शन बी सिलेक्टेड देन ये होगा, नहीं। यू कांट बिल्ड अजम्पशन ऑन अजम्पशन ऑन अजम्पशन, अजम्पशन पे अजम्पशन, कहानी नहीं बनेगी, राइट। एक बेस होता है, एक फैक्ट होता है, तो फैक्ट पे ही अजम्पशन बनती है एंड देन यू कीप दैट अजम्पशन कांस्टेंट। दैट्स द रूल ऑफ फाइनेंशियल मॉडल। All right, so here we are done with the basic sales and basic expenses. Operating profit कैसे आएगा? We will say sales minus खर्चे, expenses is our operating profit. ये percentage वगैरह की, this is all not needed. I'll delete it. So this is our operating profit. प्लीज मेक श्योर व्हेन यू आर मेकिंग द मॉडल, कलर कोडिंग तभी के तभी करते जाना, ऐसे नहीं कि बाद में करेंगे, बाद में कुछ समझ नहीं आता, तभी के तभी इंस्टेंटली देखते जाओ क्या ब्लैक है, क्या रेड है, क्या ब्लू है। ठीक है, ब्लैक में सारे कैलकुलेशंस होते हैं। ऑल राइट, अदर इनकम। तो अदर इनकम कैन यू सी, ये पूरा रिपीटेशन है, देखो सम में देखो 549 कुछ तो है, सम 120 क्या है इनका है। अच्छा, ओके, इसको थोड़ा ठीक करते हैं, फॉर्मेट थोड़ा हमारा अकाउंट्स का फॉर्मेट है, इसको थोड़ा ठीक करते हैं। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पहले तो आपको पता चल रहा होगा, ये देखो इन दोनों का टोटल 286 280, तो ये रिपीटेशन है, रिपीटेशन डिलीट करो। अब यू कम टू नो दैट ये ऐड करने के बाद आपको मिलता है एबिटा, right? I can say this plus this plus this is the EBITDA, right? Make it black. Whatever working you have done, it's not necessary कि वो side है तो वैसे काम करेगा, नहीं, whatever working you have done, make it black. All right. So this is EBITDA. Now after EBITDA, all right. So write them down. After EBITDA, what comes? What comes after EBITDA? Depreciation. Right. So what I'll say in depreciation,
EBITDA? No. How does depreciation works? EBITDA minus depreciation is what? EBITDA, right? And EBIT minus interest is आपका profit before tax. फिर tax जाएगा, फिर net profit आएगा and all that, right? So this is fine. आपका जो net profit है should look like, you know, the closed ones. So net profit का नाम मैं change करके PAT कर देती हूँ. I'll make it PAT and I'll make it PBT. All right. Now, this is blue. Blue है, एक बार check करें. हमारा भी सेम आता है इधर 260 पे. अगर हम इसको this minus this, हाँ 260 सेम आया. पूरा चेक करते चलते. ड्रैग किया 159. Oh, this one is not matching. 1180, 303. Okay, here we have not dragged it now. That's why this one is not matching. Now I'll drag. See. हाँ 159 करेक्ट. माइनस 465. ठीक है, पूरा ड्रैग किया, पूरा परफेक्टली मैचिंग. मेक इट लुक ब्लैक. Because I have calculated it, I'll make it black, right? So now these calculations are very nicely done. So what I'll do is, whatever are the black wala calculations, no, you can drag them up till here. All the black calculations. Okay, all the black calculations, you can drag them up and make it look like that. No, these blue ones are to be made black and delete, right? So basically I have dragged only this part of working. EBITDA, EBIT, PBT, ये numbers मैंने drag नहीं करी, right? इसको एक काम करेंगे हम. I'll say view and free spans so that, you know, when you drag it, the upper one should, like the, you know, year names should remain constant. All right. Now, let's focus on items one by one, right? So coming on to the first item, which is exceptional items. For exceptional items, put it directly 0. क्या डाल देंगे? 0. And make it red. You say, you know, these are exceptional. Exceptional is कभी कभी होता है. अभी हमें क्या पता कभी कभी क्या होता है, कैसे होता है. Put it 0. We don't know what it is. Put it 0. Okay, so exceptional items are clean 0. उसके बाद है अदर इनकम नॉर्मल. तो अदर इनकम हम इस पे कल काम करेंगे. अदर इनकम पे वी विल वर्क, डेप्रिसिएशन पे वी विल वर्क, इंटरेस्ट पे वी विल वर्क. इन तीनों पे वी विल वर्क. इफ यू वांट आई कैन मेक देम लुक लाइक ये येलो. दिस इज वेरी वेरी टेम्पररी. The yellow signs are very, very temporary because we will work on them. Why? Because as of now, if you ask me what is my focus is to make the basic model. Basic model बनाना है. ठीक है? All right. Tax कर लेते हैं. Tax बहुत easy होता है, तो tax कर लेते हैं. इसको तो हम खुद करेंगे, right? इसको हम खुद करेंगे. सब black होगा. Everything we will work. Now you tell me tax. What do you think? What assumptions we should take in the tax? क्या assumption लेनी चाहिए हम? देखो 33%, 27, क्या assumption लो? बता सकते हो? जनरलाइज परसेंटेज जो लगता है. Average. हाँ जी, actually वो करना चाहिए. अभी देखो. There are 2 to 3 things. One thing is, some people take average of last 3-4 साल, which is very, very wrong in the case of tax and in the case of dividend. डिविडेंड और टैक्स में ऐसा नहीं करना. क्योंकि क्या होता है, लेट्स से अभी टैक्स का या डिविडेंड का बजट आता है. डिविडेंड का भी कंपनी नया कुछ जो भी लेकर आती है, तो होता क्या है कि व्हाट इज सीन इज, यू नो, व्हाट वाज इट पहले, अभी तक क्या था, व्हाट वाज द सीन अभी तक, right? So let's say there is no change.
कोई भी चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, टैक्स कौन सा होगा, सेम एज लास्ट ईयर, राइट, इट विल नॉट बी। अच्छा आप एक बात बताओ, आपकी सैलरी है, इस साल आपकी सैलरी है 10 लाख, कल है 20 लाख, नेक्स्ट ईयर है 30 लाख, तो चौथे साल में क्या होगी, एवरेज ऑफ 3 साल क्या होगी, विल इट बी एवरेज ऑफ 3 साल, और विल यू एक्सपेक्ट हेयर 40, राइट 40. समझो, 40. अच्छा समझो बताया ही नहीं, इस बार कोई कोई हाइक नहीं मिला, तो योर सैलरी विल बी व्हाट, 30 lakhs, राइट, सेम एज लास्ट ईयर। सो टैक्स और डिविडेंड कुछ नहीं बोला, तो जो भी रिसेंट वाला था, बट रिसेंट वाला लेने में प्रॉब्लम ये है कि 12% एक सही रेट नहीं लग रहा है, 12% is not seeming a very, it's not a generalized rate. Like you said, generalized rates are generally 25-27% के आसपास होते हैं. So that's why I will prefer not to take 12 and take 27 last to last year. वैसे आप क्या लेते थे, लास्ट ईयर ले लेते थे सिंपली, बट देख रहे हो आप यहाँ पे इनके माइनस माइनस हैं, इनकी कुछ पिछली एडजस्टमेंट्स चल रही हैं, बहुत सारी मैथ होता है और भी बहुत चीजें होती हैं. So that's why I prefer to take 27, और ये these assumptions will vary, new model, new things you will be doing, so every time you will be having like this is not कि ऐसा ही करना, आपके ऊपर है आप क्या थॉट लेते हो. So 921 multiplied by 1 minus tax rate, right? तो हमने टैक्स का अमाउंट नहीं लिखा है बिकॉज ऑफ देयर फॉर्मेट, so that's okay. So fine, we have got PAT, profit after tax, हमें PAT मिल गया sheet. Now when you come to balance sheet, please understand that in balance sheet most of the items are such which are not related to the operating activities of the company. You remember mostly जब आप स्कैन करते हो तो क्या CFI CFF के आइटम्स होते हैं, है ना, तो इन आइटम्स का कंपनी के, देखो व्हेन यू टॉक अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, वैल्यूएशन किस पे बेस्ड होती है, प्रॉफिट्स पे. प्रॉफिट्स वाले आइटम्स, अगर लेट्स से देयर इज अ एंट्री कि आपने लोन लिया है, लोन टू कैश, कैश टू लोन, सो अगर ये एंट्री मैंने नहीं भी की तो ओनली कैश फ्लो इज डिलेड, राइट, सो वी डोंट हैव टू, उससे प्रॉफिट्स को कोई फर्क नहीं पड़ा. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल बी सेइंग फॉर ऑल द ईयर्स, वी विल बी सेइंग ब्लाइंडली, कुछ भी नहीं करना, सब ईयर्स में बोलो सेम एज लास्ट ईयर. देखो आपकी बैलेंस शीट भी आपको टैली मिलेगी, और रेड कलर कर दो, आई टेल यू ये क्यों करना है, ठीक है, सबके सब ईयर्स सिंपली do it same as last year and make it red because this is our assumption, right? Make it red. जहां भी zeros हैं, delete it and make it red. All right. Now, what we will do is ऐसे करके balance sheet tally करना is not the way, right? Because we have already changed income statement, so we have to work on balance sheet also. So how we will work on balance sheet is we will take it up which items, two items, please remember two items, ये साइड से रिजर्व्स उठाओ एंड ये साइड से कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है, delete these two items and make their color black. Delete these two items, let the balance sheet be untanned. Okay, reserves liability side से cash and cash equivalents debit side से, done. Now you tell me reserves, बिकॉज और कोई आइटम में हमने कोई चेंजेस करी नहीं, ना आपने डेप्रिसिएशन को हाथ लगाया, ना आपने इंटरेस्ट को हाथ लगाया, कुछ किया ही नहीं, सेल्स वगैरह आपने जो भी चेंज किया उसकी वजह से पैट चेंज हुआ. रिजर्व्स कैसे निकालते हैं आगे के ईयर के, आपको पता है, बताओ हाउ डू यू कैलकुलेट रिजर्व्स. टेल मी हाउ डू वी कैलकुलेट रिजर्व्स. Ma'am, after deducting debentures and preference PAT payment minus dividend. from that. डिविडेंड तो बाद में आएगा, अभी तो डिविडेंड पे वी हैव नॉट डन एनी वर्किंग. हाउ डू वी कैलकुलेट रिजर्व्स इन प्रोजेक्ट फाइनेंस. In project finance, what do we do?
डिविडेंड तो वी जस्ट लेफ्ट इट डिविडेंड, देखो वो भी मैंने येलो कलर ही छोड़ दिया कि बाद में देखेंगे, अभी वी आर नॉट वर्किंग ऑन डिविडेंड्स, कुछ दे ही नहीं रहे, पहले तो कमाए तो सही. Do you remember how do we calculate in project finance? How do we calculate reserves in project finance? What do you mean by reserves? What's the word reserves means? Accumulated profits. Profit कितना जमा किया? So हम बोलेंगे आज तक कितना प्रॉफिट जमा किया था लास्ट ईयर तक 4540 प्लस करंट ईयर में कितना प्रॉफिट आया नया फ्रेश, बोलो उसको क्या बोलते हैं? करंट ईयर पैट, राइट? Current year you added this much money na, right? So what do we say? We say, you know, whatever was till now profit, usme you will add current year PAT. Yes, is that okay? This is not going to make your balance sheet tally because we are still, you know, cash equivalents हमने अभी भी नहीं डाला. So what we will do is this balance sheet we will move or copy. I'll create a copy. Why I'm doing this? Because I want the format. Why I'm doing this? Because I want the format. And I will make the cash flow statement. Yes. Tell me. Are you comfortable? Should we move on to the cash flow statement? Any questions? Mom, can you once again explain the reason why we only took March 24 entries? Because see, this is accumulated profit. So you will say whatever I made till last year plus what is the fresh money you earned in March 25? In March 25, you made this 672. No, ma'am, I'm asking कि हमने next 4 years का सारा data 24 का ही copy किया. हाँ, बिकॉज व्हाट विल यू से, ये वही बात हो गई आपकी जो सैलरी वाली बात थी 10 20 30 40. तो अगर कोई भी चेंज नहीं है तो हम क्या अज्यूम करेंगे? अगर कोई भी चेंज नहीं है तो आप क्या अज्यूम करोगे? लेट्स से मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, इस साल आपने कोई लोन नहीं लिया, तो आपका लोन कितना होगा? एवरेज ऑफ लास्ट 6 साल या वॉट एवर वॉज देयर इन लास्ट ईयर. देखो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नो अंडरस्टैंड इज जो पीएनएल होता है ना, इनकम स्टेटमेंट, वो ऐसे चलता है इस साल क्या हुआ, इस साल क्या हुआ. बैलेंस शीट कैसे चलता है? अब तक क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टिल नाउ का टोटल आता है यहाँ. पीएनएल सिर्फ आज की बात कर, यहाँ पे यू कैन राइट इट कैश फ्लो स्टेटमेंट, आप इसको फुल में लिख सकते हो. And this is all, this is not I needed, I just copied this because you know I wanted this whole format to be with me. इसको भी हम तो we will continue with this format. What comes to your mind when we talk about cash flow statement? What are the 3 lines? In full you can write. One is CFO, one is CFI, one is CFS, right? So later on we'll fill all. Abhi, as of now, what do you have? As of now, what do you have? What data you have? CFO, CFI, and CFS. Anji, as of now, what do you have? Let's scan full income statement. Scan full income statement. Aya gaya, aya gaya, aya gaya. What's the ultimate thing? What's the ultimate thing? PAT. PAT कहाँ आता है? CFO, CFI, या CFS? CFO. Very good. So CFO, and no need to make actual का. Actual का no need to make. Make only estimated का. ठीक है? And never copy also from screener. Never. Cash flow statement खुद बनाएंगे हम. But what about these
these columns, let them be empty. I told you, please follow these rules. Like H column is March 25. आगे जितने भी और भी बहुत सारी sheets बनेंगी, H column will always be March 25. H column will always be March 25. ऐसे नहीं कि यहाँ पे अभी ये काम के नहीं है तो आपने इनको डिलीट करके इसको इधर ला दिया. No, don't do that. Let it be empty. ठीक है? What you can do is you can just decrease their size if you don't like it, but don't delete it. They have to be there. They have to appear. Don't change the column numbers. ठीक है? जब टैली नहीं होता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे हम देखते हैं एच का एच में ही आया क्या डेटा, आई का आई नहीं आया क्या. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम व्हेन द मॉडल बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स. सो हाँ जी, कमिंग ऑन टू CFO, राइट, एंड ऑल्सो वी विल बी हैविंग सम CFI. कुछ CFI भी होगा. ठीक है, अभी नहीं है. there will be some CFF also, abhi nahi hai. And the total will be what? The total will be net change in cash. How much is the net change in cash? The net change in cash is CFO plus CFI plus CFF. Done. And all right, so this is net change in cash. Can you tell me iske baad kya hota hai? Opening and closing, right? Opening is what? What is opening? What is opening? Opening is always last year closing. And what is closing? Closing is जहां से आपने start किया था plus whatever money you have added. All right. So what we will do is let's drag all of them. Let's drag all of them. And now you can see we have got the closing cash. इसी closing cash के लिए आए थे हम यहाँ पे, right? Can we substitute this closing cash in our balance sheet? Let's try and substitute. I will say is equals to cash flow statement, ये वाला closing March 25, right? And as I drag it, you see still my balance sheet is not tallying. What's the problem? Can you guess why the balance sheet is still not tallying? You can see it. Yes, tell me why the balance sheet is still not tallying. Any idea? This opening, is it zero or is it there? Is it something? यहाँ पे closing March 24 का closing zero है क्या? March 24 का closing कितना है? Cash का 526 है, right? 526 is the March 24 का closing, right? So as you fill it up, you will see your balance sheet gets tally. And if you follow this approach, every time your balance sheet will tally, and then only, once you tally this, then only go for all these things कि हमने depreciation निकाला, other income निकाला. See, balance sheet is also not going to remain like this. We will work on these items. Like इनको भी हम black करेंगे, इसको delete करेंगे, black करेंगे, इस पे काम करेंगे, फिर इसको delete करेंगे, black करेंगे, इस पे काम करेंगे. But एक एक करके, right? Like मैंने trade payables पूरा delete किया. I'll work only on trade payables. Okay, I'll make it a schedule. I'll work on it. I'll make it black, get the new numbers for it, and then tally the balance sheet also. Then step 1. Then step 2, work on trade receivables. Again, only on trade receivables. What generally people do is when you start, साथ साथ में सब करते जाएंगे, अदर इनकम भी करेंगे, डेप्रिसिएशन भी. If you do 100 things together and then at the end when balance sheet doesn't tally, you don't know why it is not tallying. But आपने एक बार बेसिक टैली कर दिया, बेसिक तो टैली होगा ही होगा. Anybody can make you tally this. एक बार ये टैली हो गया, इसके बाद it is very easy to upgrade. It's very easy. इसके बाद आपने ट्रेड रिसीवेबल्स पे काम करा एंड टैली नहीं हो रहा, तो आप किस पे ढूंढोगे? अदर इनकम पे जाके ढूंढोगे, डेप्रिसिएशन ढूंढोगे? नो, you will find out trade receivables only because you know कि 5 मिनट पहले टैली था, अभी टैली नहीं हो रहा, तो ट्रेड रिसीवेबल में ही प्रॉब्लम होगी, तो उसी को ढूंढोगे. एंड इट इज वेरी इजियर फॉर यू टू get to the track, get to the path. Otherwise you every time the only solution at that time is given is कि भाई पूरा डिलीट करो फिर से बनाओ, क्योंकि नहीं मिलने वाला.